hn zeta and exponential minus zeta square by 2. I mentioned you that you need to recall this. See, the normalization constant alpha divided by 2 to the power n factorial root pi whole to the power half. This is the normalization constant. Then you have hn zeta, an exponential minus zeta square by 2. We can express psi in terms of zeta or in terms of x. So, yes, you can write in terms of x also. How is zeta related to x? Zeta equals to alpha x. Zeta is alpha x. So you can write this as psi n function of x is alpha divided by 2 to the power n factorial root pi whole to the power half hn function of alpha x and exponential minus alpha square x square by 2. Though I prefer this one because it is much convenient to remember, and as and when required we can put the value of zeta there whenever it is required. We can substitute the value of zeta. And what was the expression for the energy eigenvalue? En. Energy eigenvalue En. So n plus half into h cut omega. N plus half into h cut omega. Yes, and in both this expression, n starts from 0. 0, 1, 2, 3, and so on. Do you remember what was the value of alpha? अल्फा हम लोग किसको माने थे? Under root m omega by h cut. Under root m omega by h cut. True. Under root m omega by h cut. And what was the value of k? K was equals to m into ओमेगा स्क्वायर. ये क्यों नहीं याद हो रहा है? इतना कॉमन चीज है. इसी से तो मिलता है कि ओमेगा इज अंडर रूट के बाई एम. जो आप स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए लिखते हैं उसी जगह पर ये रिलेशन यूज हो जाता है. So k is m omega square. So this you need to keep in mind. And one more thing that you need to keep in mind for obtaining the wave function is obviously that Hermite polynomial, its generating function. The generating function for Hermite polynomial, we have to substitute it here. No? That is why you need to remember the expression as well as its different values. Hn zeta, it was like minus 1 to the power n. With value of n, the positive negative term keep on changing. Then it is exponential zeta square.
Then you have d by d zeta, d by d zeta, but it is the nth derivative of exponential minus zeta square. डिफरेंस पे थोड़ा ध्यान देना. वेव फंक्शन में इट इज माइनस जीटा स्क्वायर बाई टू और हेयर इट इज माइनस जीटा स्क्वायर बाई टू का कोई टर्म नहीं है. एंड इफ यू सॉल्व द वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, if you start with 0, you get h0 zeta as 1. Probably we have seen this. h1 zeta was like 2 times zeta. ऐसा कुछ हम लोगों को मिला था. बाकी वैल्यूज को भी आपको निकालने के लिए बोले थे. एंड आई हैव रिटन इट in the answer provided to you. This is 4 zeta square minus 2 and so on. So these are the things which you need to keep in mind for analyzing the physical meaning of what we have studied. So do keep this in mind, and now we will start analyzing it very gradually, no rush, because all the calculation that we have performed here was to get an understanding of this section only. Okay, so let us consider a linear harmonic oscillator. That means a particle executing to and fro motion about the mean position. About the mean position, but obviously on a straight line. Suppose this is the mean position and the particle is executing to and fro motion. The particle is executing to and fro motion. Let at t equals to 0, the particle is at the mean position, and at some time t, its distance from the mean position is x, and at this instant, the speed of the particle is v. At this instant, the speed of the particle is v, and assume that the amplitude is a or x naught, whatever you write. Now, I will ask you a question which we have once discussed earlier also, but okay, then also we'll repeat it. Suppose this is our x direction. Now, the particle is executing to and fro motion on a straight line about a mean position. Suppose if I ask you that the particle is oscillating on a straight line about the mean position, if I ask you that where is the particle most likely to be found, what would be the answer? Particle ऐसे oscillate कर Sir, रहा है at extreme position. at extreme position. Particle is executing to and fro motion, और आपको ये पूछा जा रहा है कि where is the particle most likely to be found. तो आंसर बोला गया at the extreme position. For what reason? सर क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन में पार्टिकल का स्पीड सबसे कम होगा तो वो वहाँ ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करेगा. हाँ, एकदम करेक्ट. एसएचएम के लिए हम लोग ये बात एक बार डिस्कस किए थे जब हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू पढ़े थे. वहां पर जस्ट ग्लांस होके पार हो गए थे, बट हियर वी विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल्स टुडे. When a particle execute SHM, where is the speed maximum? At the mean position. And at the extreme, the velocity becomes 0.
0. That means the particle moves more rapidly. The particle moves more rapidly. The particle moves more rapidly near the mean position and it slows down at the extreme. Turns here, then again. But if you think about it, just observe that, isn't it that the motion is something like this? यहाँ धीरे धीरे चलता है, यहाँ जल्दी से चला जाता है, स्लो. यहाँ पर स्लो मूव करता है, मिडिल के पास स्पीड ज्यादा है, तो मिडिल के पास स्पीड ज्यादा है तो यहाँ जल्दी से पार हो जाता है, फिर यहाँ स्लो डाउन. So because it spends less time near the mean position and it spends more time near the extreme. So in a given measurement, it is most likely to be found near the extreme. पार्टिकल कम समय मीन पोजीशन पर बिताता है और ज्यादा समय एक्सट्रीम पर बिताता है, तो किसी भी मेजरमेंट में उसके एक्सट्रीम पर मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू द मीन पोजीशन. यस, रिप्लाई में इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाइन. Now, suppose that I consider a very small length here. I consider a very small length here. This one. And this is dx, a small distance along the x-axis. What is the speed of the particle here? V. And what will be the speed here? More than V, less than V? Less than V. Less than V. Less than V. Correct. But suppose if I do the same calculation as we used to do earlier, that if I suppose that this distance is very small, infinitely small, so here the speed is V and here the speed is V minus dV. But if I suppose that this distance is very small, can I assume that the change in speed will be also very small? That means, may I approximately take this to V only? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. यस, ये काम हम लोग क्लासिकल में भी करते हैं, अभी हम क्लासिकल ही कर रहे हैं. तो here the speed of the particle is v and I am assuming that this distance is so small that during this very small distance there is negligible change in speed. So is it that I am assuming that the particle is moving this distance with a constant speed v? Yes, sir. So what time will it take to travel that distance? यहां से यहां वो कितना स्पीड से चला गया? V. v. कितना दूर चला? Dx. Dx. तो कितना टाइम लगेगा, इतना ही तो पूछ रहे हैं. Dx by V.
dx by v. This will be the time taken by the particle to move through the small distance. स्मॉल डिस्टेंस को चलने में पार्टिकल को इतना टाइम लगेगा. ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ड्यूरिंग व्हाट कंप्लीट ऑसिलेशन, इस डिस्टेंस को वो कितनी बार चलता है? 2 बार. So what is the total time that the particle spends there? 2 into dx by v. Correct. Is it okay everyone? ये वो टोटल टाइम है जो टाइम पार्टिकल उस जगह पर बिताता है. एग्री? Yes, sir. Yes, sir. What time does the particle takes to complete one oscillation? It is the time period, isn't it? Yes, Yes, sir. sir. This is the time taken, this is the time which the particle spends in traveling this distance, and this is the time which the particle takes to complete the entire distance. So, can I say that this dt by t will give me the probability of finding the particle in a distance dx? Assume that this is our probability density, and probability density multiplied by length will give you probability. For one-dimensional case, probability density is basically probability per unit length into length. So you get the probability. Yes, do reply. समझ पा रहे हैं कि नहीं? Sir, here capital T is the time period of the oscillation. Yes. And this is just from the basic definition of probability. You know that you define probability as the number of event by number of sample space. So ये dx distance हमारा event है और ये हमारा पूरा sample space है. तो यहां पर वो इवेंट का टाइम कितना है? तो dt है, और सैंपल स्पेस का टाइम कितना है? t. So event by sample space is probability. Yes, sir. Got this, everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So what will be the value? So you have 2 times dx divided by v into t. Now the probability will be 2 times dx divided by, what is the value of v? V as a function of x. Omega under root a square minus x square. So this is x naught square minus and X square. x square, a square minus x square. a भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. Into time period, can I write it 2 pi by omega? Omega cancels out, 2 cancels out. So you are left with something like px dx is dx divided by pi under root a square minus x square. This is the probability of finding the particle
inner distance dx, where the distance dx is at a distance of x from the mean position. This is classical theory. I'm repeating it. This is classical theory. I'm still discussing the classical point. Now, from the formula, ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट सोच लिए हैं, लेकिन फॉर्मूला से बताइए कि प्रोबेबिलिटी कब मैक्सिमम होगा. प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होने के लिए इस टर्म को मिनिमम होना पड़ेगा. Yes, sir. Yes, ये sir. टर्म ये टर्म मिनिमम कब होगा? तो जब हम x नॉट में से ज्यादा चीज सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ज्यादा से ज्यादा सब्सट्रैक्ट Yes, कर sir. दोगे तो कम से कम बचेगा एंड प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमाइज्ड. Is it so? Yes, sir. Yes, That sir. means the probability is maximum when x tends to plus or minus x naught. ठीक है. Yes, sir. क्या हमको लॉजिकली भी यही आंसर मिला था कि हाँ एक्सट्रीम पर पार्टिकल के मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? Yes, sir. Yes, sir. तो वही सेम चीज को खाली मैथमेटिकली दिखा दिए. नाउ डज क्वांटम मैकेनिक्स ऑल्सो टेल्स द सेम थिंग? भी यही बोल रहा है. क्वांटम मैकेनिक्स भी सेम आंसर दे रहा है कि नहीं? दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस. This is the mean position. The classical limit is plus x naught and minus x naught. And suppose that the wave function psi n zeta, I'm writing it repeatedly so as it will help us to remember it. Alpha by 2 to the power n, to the power n n factorial root pi root pi whole to the power half hn h zeta. Correct? Yes, sir. Now, I will not proceed with this. Rather, I will start with the case of ground state or the minimum energy state when n is equals to 0. When n is 0. If n is 0, what will be the value of psi naught zeta? What is the value of h0 zeta? 1. 1. Into 1 into it does not contain any term involving n. So minus zeta square by 2. What is 2 to the power 0? 1. 1. What is 0 factorial? 1. 1. 1. So you are left with alpha by root pi to the power half into exponential minus zeta square by 2 exponential minus zeta square by 2. This is the value of psi 0. हम इसको साई नॉट एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, खाली जीटा को अल्फा एक्स लिख देंगे.
So we can anytime do that. And what is the minimum energy the harmonic oscillator can have? N plus half h cut omega. Half H h cut cut omega omega. by Half 2. h cut omega. Correct. So this is the wave function corresponding to the ground state, and this is the energy associated with the harmonic oscillator when it is in its ground state. Correct? Also, if I calculate psi 0 zeta mod square for a normalized wave function, will it give us the probability? Yes, sir. Yes, so it will give us the probability which will be equal to alpha by root pi exponential minus zeta square. Yes, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Also, tell me one more thing, that when the particle is in its lowest energy state, when the particle is in its lowest energy state, what is the classical limit? That means up to what distance is the particle oscillating? I hope you understand that more will be the energy. Suppose with less energy the particle is oscillating like this. With more energy, will it execute SHM like this, moving up to a greater distance? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So, what is the classical limit in the lowest energy state? How will I calculate that? See, uh, when the particle executes SHM at the extreme, what is the kinetic energy? Kinetic 0. energy 0. That means the total energy is potential energy. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, at extreme, the total energy is potential energy. The potential energy can be written as half k x naught square at the extreme. Yes, sir. And let me, for the timing, keep it as E only. So you have x naught as 2e divided by m omega square under root plus or minus. Yes, sir. Is it giving you the classical limit? Now, Yes, sir. for n equal to 0, what will be the classical limit? For n equal to 0, I know the value of E. It is half h cut omega. So you have something like h cut by m omega.
classical limit for the lowest energy state. What was alpha? आप लोग थोड़ा देर पहले हमको बताए थे. What was alpha? m omega by under root m omega by h cut. So Under what root is m this omega term? by k. No, under root mm by h cut. So what is this term? 1 by alpha. 1 by alpha. Correct. And how is alpha related to zeta? Zeta is equal to alpha x. Zeta equals to alpha x. So alpha can be written as zeta by x. क्या? By x. Okay. X naught is plus minus alpha. Let me keep it here only. When I will require that, then I will convert. So where I need to focus now? Now focus on this. This wave function. The ground state wave function and its mod square. इस दोनों पर ध्यान देना है. Ground state wave function and its mod square. So let me take a new page and let me write the ground state wave function again. Psi naught zeta. It was like alpha by how much? Root pi. Alpha by root pi whole to the power half, and then you have exponential minus zeta square. Is it? Zeta square by 2. Zeta square by 2, yes. Now, for convenience, if I take this alpha on the left hand side, it will be something like this. ठीक चल रहा है सब? Yes, sir. Yes, sir. So what I want is, I want to plot the wave function. I want to plot the wave function. The rough plot. I want to plot the wave function, just a rough plot. So I want to plot the wave function, and in this axis, I can either keep x or zeta. They are interrelated. And in this axis, I want to keep the wave function. But one more additional thing, what I will do is, in y-axis, I will keep this one also. Alpha to the power minus half psi naught zeta. This will help me because it will now involve only a constant and the function. So you have a constant 1 by pi to the power 1 by 4. Is it possible to evaluate this? Yes or no? I'm not asking the value. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So if I plot this function, will it pass through the origin? What is the value at x equals to or zeta equals to 0? If zeta is 0, this term is 1.
So we are left with this thing जिसका कुछ वैल्यू है. That means at zeta equals to 0, this quantity is not equal to 0. It has some values. And if zeta increases, this function will Decrease. decrease. This is our well-known Gaussian function. जल्दी जल्दी बताएगा. So, will the variation look like this? When zeta tends to infinity, then the left hand side will become 0. And because it is minus of zeta square, so it will be symmetric about the origin. An inverted bell-like shape. Oh no, not inverted, a bell-like shape. Simply. Agree? Yes, sir. बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहा है, सब बंद करके सो गया. बाद Yes, में sir. भी सोना पड़ेगा. Yes, sir. ठीक है ना सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इसका हमको बताइए. मॉड स्क्वायर वाला ग्राफ. साइनॉड जीटा mod square is alpha by root pi exponential minus zeta square. So you have alpha to the power minus 1 sinod zeta mod square is 1 by root pi exponential minus zeta square. Yes, agree with the calculation? Yes, sir. Yes, sir. So now I will plot. Alpha to the power minus 1 sinod zeta mod square का ग्राफ जीटा के साथ. फिर वही स्टोरी है. एट जीटा इक्वल्स टू 0 इट इज नॉट 0, लेकिन जो भी वैल्यू है वो पहले वाला से ज्यादा की कम. माने यहां जो पीक वैल्यू था इससे ये ज्यादा की कम आ रहा है. क्या प्रॉब्लम है बोलिए. सर कम होगा. x इक्वल टू 0 पर ई वाला कोफिशिएंट कितना है? 1 by pi to the power 1 by 4. इसका x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितना है? सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है.
यहां इसका वैल्यू ज्यादा है तो ई वैल्यू का अभी इज इट नाउ विजिबल? Yes, sir. Sir. Not presentation. अब आया होगा? Yes, sir. ओके, सो आई वाज आस्किंग कि ये वाला फैक्टर बड़ा है कि ये वाला फैक्टर बड़ा है, लेफ्ट वन और राइट वन? Left one. लेफ्ट वन। तो देखो नेचर क्या है, यहां पर भी ये एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा स्क्वायर बाई 2 है, यहां भी एक्सपोनेंशियल जीटा स्क्वायर है। नेचर ऑफ द फंक्शन विल बी सेम, द पीक वैल्यू विल बी अ लिटिल बिट सप्रेस्ड। Will it be like this? Yes, sir. Yes, sir. The graph that I will show you, उसमें ये सारा वैल्यू लिखा हुआ भी होगा, लेकिन पहले अपने से तो कर लें, तब ना समझेंगे कि वो क्या वैल्यू लिखा हुआ है वहां पर। Now, is it the variation of probability? Is it the variation of probability with zeta? Is it the variation of probability with Sir. zeta? Yes, Yes, sir. sir. And where is the particle most likely to be found? At the mean position. At the mean position. As per the classical theory, where was the particle most likely to be found? At the extreme position. Extreme position. देखिए दोनों एकदम उल्टा बता रहा है। According to quantum mechanics, the particle is most likely to be found at the mean position, whereas classical mechanics suggested that the particle was likely to be found at the extreme. खाली लॉजिक से नहीं, मैथमेटिक्स से भी दिखाए थे, इसीलिए कि ओरल बोलेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा हम लोगों को समझने में दिक्कत हो, इसलिए हमने आपको उसको मैथमेटिकली भी वेरीफाई करके दिखाया था। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. पहले हम लोग इसी को अच्छा से दिमाग में बैठाएं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर सोचेंगे कि क्यों डिफरेंस है। दैट वी विल एंटर लेटर ऑन, धीरे धीरे जाएंगे उस पर, लेकिन पहले ये तो समझें कि डिफरेंस क्या है। दूसरा बात, हमको ये बताओ कि इज इट द केस ऑफ द लोएस्ट एनर्जी? Yes, sir. Yes, sir. And during the minimum energy state, what is the classical limit? Particle maximum कहां तक जाएगा? Tell me the classical limit in terms of zeta, जिसको उस समय कर रहे थे थोड़ा सा। Classical limit in terms of zeta. Classical limit in terms of zeta.
जीटा के टर्म्स में क्लासिकल लिमिट रिटर्न जाते हैं, छोड़ दिए थे बीच में कहीं. क्लासिकल लिमिट इज this one. Now see, if I cross multiply, is it like alpha into x naught is plus minus 1? Yes, sir. देखो तो क्या यही हमारा जीटा नॉट होगा? अल्फा इंटू एक्स इज जीटा. Yes. तो अल्फा इंटू एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जीटा का मैक्सिमम वैल्यू. Yes, sir. So the classical limit is 1. Do remember no unit because zeta is a unitless quantity. So the classical limit is 1. That is minus 1 and plus 1. Can you observe anything very interesting here? Can you observe Yes, sir. anything very interesting? Yes, yes, repeat. सर पार्टिकल लिमिट के बाहर भी पार्टिकल का होने का प्रोबेबिलिटी हाँ. है कुछ. एकदम correct. This is the main observation. These are the classical limit. क्लासिकल लिमिट की लोएस्ट एनर्जी स्टेट में जब पार्टिकल होगा उस समय क्लासिकल थियरी बोल रहा है कि वो यहीं तक जाएगा ऑसिलेट करते हुए, इसी लिमिट में ऑसिलेट करेगा एज पर द क्लासिकल थियरी. बट क्वांटम मैकेनिक्स इज टेलिंग यू दैट नो, देयर इज फेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इवन बियॉन्ड द क्लासिकल लिमिट. Yes. Yes, sir. Now, this conclusion is nothing very surprising to us now. Once we have dealt that potential step, potential energy, उसके बाद ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है. हम लोग पहले भी पढ़े थे कि E लेस देन V नॉट होने से भी पार्टिकल के दूसरे रीजियन में पेनिट्रेट करने का प्रोबेबिलिटी होता है. तो ये बहुत सरप्राइजिंग कुछ ऐसा बात नहीं है. दिस इज कॉमन, बट यस टू बी टेकन इनटू अकाउंट दैट द पार्टिकल मे बी फाउंड इवन बियॉन्ड द क्लासिकल लिमिट. नाउ let me return back to the answer that I gave you. This we have discussed. अब ये देखिए प्लॉट. अब इस प्लॉट में क्या किया गया है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ प्लॉटिंग है. जस्ट सी द फर्स्ट वन. देखो तो एक्स एक्सिस में क्या रख लिए हैं? Zeta. क्या यूनिट है जीटा का? No unit. No unity. इसलिए एक्सिस में खाली वैल्यूज का लेबलिंग है, कोई यूनिट नहीं है. 1 2 3 4 5 6 सो ऑन. वाई एक्सिस में अल्फा टू द पावर माइनस हाफ जीटा नॉट. If you zoom into it, this is your 0.2, 0.4, it seems to be 0.6, it seems to be 0.8. ये जो कोफिशिएंट था 1 बाई पाई का पावर 1/4, इसको कैलकुलेट करके देखोगे, बिकॉज दिस इज 0.6, दिस इज 0.8, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट कितना है? कितना वैल्यू होगा रफली देख के बोलना है. 0.7 के आसपास. 0.7 के आसपास आप कैलकुलेट करके भी देखिएगा, आपको मिल जाएगा. इसका जो वैल्यू है वो 0.7 के आसपास है, तो उसको पुट किया गया. ये वेव फंक्शन का प्लॉट है और उसके मॉड का स्क्वायर का प्लॉट. अब यहां पर देखो 0.4, 0.2, 0.4, 0.6,
0.8, ये वाला पीक इससे नीचे आ गया, Yes, sir. वैल्यू इज नियर अबाउट 0.6, 246 या 6 से भी थोड़ा सा कम ही है। एग्री? Yes, sir. Yes, sir. You can see the classical limit +1 and -1, and this is the variation of our probability, maximum at the mean position and then decreasing on either side, but extending beyond the classical limit. ये डॉट वाला क्या बनाया हुआ है? Sir, position on the curve. Pardon? सर क्लासिकल लिमिट के अकॉर्डिंग जो मीन पोजीशन पे सबसे कम प्रोबेबिलिटी है वो वाला ग्राफ। हाँ, बोल सकते हैं कि क्लासिकल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये प्रोबेबली बना हुआ है उसका पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन, बट स्टिल हम आपका बात डिसएग्री इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी ऐसा ही है, बट दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है उसको हम लोग शो करते हैं, मैंने इसलिए कि ऐसा पोटेंशियल पर कैसा वेरिएशन है, बट स्टिल यू कैन टेक दिस। अब अभी आइदर और दोनों में से किसी को भी सोच सकते हैं। नाउ व्हाट टू डू इज, हम लोग इसको डायरेक्ट देखेंगे नहीं, वी विल हैव ए गो वंस अगेन। ये कौन सा केस कैलकुलेट किया था हमने? Ground state. Ground ग्राउंड state. स्टेट। अब हम नेक्स्ट वाला स्टेट को भी करेंगे, देख के नहीं बताना, आंसर तुम्हारे पास है, देख के बता दोगे, अभी के लिए आपको हेल्प मिलेगा लेकिन बाद के लिए तकलीफ मिलेगा। तो लेट अस ट्राई। हम भी सिर्फ इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। साई एन जीटा अल्फा डिवाइडेड बाई 2 to the power n. 2 to the power n, N n factorial factorial under root pi root pi whole to the power whole divided by 1 by 2 half. आगे h H n n H n zeta zeta e e to to the the power power minus minus g zeta square square by by 2. 2. बोलिए। 2 to the power 1, 2. 1 factorial अल्फा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट पाई का पावर हाफ। Yes, sir. What was the value of h1 zeta? 2 zeta. 2 zeta. Exponential minus zeta square by 2. Yes, sir. What will be psi 1? एक मिनट। What will be psi 1 zeta mod square? बोलो। Yes, sir. ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि अल्फा हमको नोन नहीं है, इसको इधर ले जाते हैं ग्राफ के लिए खाली। और यहां ले जाएंगे तो अल्फा का पावर -1। Is it okay? Yes, sir.
क्लासिकल लिमिट फाइंड करते हैं। क्लासिकल लिमिट कैसे फाइंड किए थे कि एक्सट्रीम पर टोटल एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर is E. So what was the value of x naught? Plus minus 2E divided by m omega square under root. X naught is plus minus. What is the energy value this time? What is the energy value this time? 3/2 h cut omega. Very correct. 3 by 2 h cut omega. 2 cancels out, omega cancels out. So you have plus or minus under root 3 h cut by m omega. In terms of alpha, it is plus minus. Am I correct? हाँ ना नहीं बोल रहा है कैलकुलेशन में भी। सर √3/α होगा ना? करेक्ट, तो बोलना है ना, गलत लिख रहे हैं तो उसको मान नहीं लेना है। नाउ करेक्ट? Yes, sir. That means zeta naught is plus or minus 1.732. यस सर. क्लासिकल लिमिट, क्लासिकल लिमिट पता चल गया, वेव फंक्शन पता चल गया। अब इसका प्लॉट सोचना है। पहले तो फंक्शन देख लो, क्या फंक्शन अभी भी वही है जो पहले था? Yes, sir. है, लेकिन साथ में एक तो जीटा यहां घुस गया जो पिछला बार नहीं था। Yes, sir. What will be the value of this LHS at zeta equal to 0? 0. 0. That means will it pass through the origin? Yes, sir. So it will pass through the origin. Now, for positive values of zeta, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, माने ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है। पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ जीटा पे ये पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ जीटा पे ही नेगेटिव होगा। Yes, sir. दूसरा बात, इस बार भी कोफिशिएंट का वैल्यू निकल तो जाएगा ही। यस सर. और जब उसके मॉड का स्क्वायर लेंगे तब जीटा का स्क्वायर है, प्लस में भी प्लस आएगा, माइनस में भी प्लस आएगा। यस सर. सो नाउ यू ऑब्जर्व द, हम बना सकते हैं लेकिन यहां पर बहुत प्रॉपर डेटा के साथ बना हुआ है। देखिए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन, इज इट पासिंग थ्रू द ओरिजिन? यस सर. Now, as x increases, the function initially increases. Why it is so? Because this one, when x zeta increases, now initially it is dominating. When zeta increases, this increases. Then finally this dominates. So, the nature of the curve which we can see is, it is like this. Are you getting this? It is increasing, getting maximum, and then it is exponential minus zeta square by 2. For positive values of zeta, it is positive, but for negative values of zeta, it is negative. हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Can you find the value of zeta where it takes this maximum?
पूछ नहीं रहे हैं, हम खाली पूछ रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंस बताओ कि खोज लेंगे। हम आपको सिर्फ पूछ रहे हैं कि विल आई बी एबल टू कैलकुलेट। हमारा लेफ्ट हैंड साइड मैंने वाई एक्सिस ये ना है, हम पूछ रहे हैं कि ये कहाँ मैक्सिमम हुआ, नहीं खोज लेंगे, इसको मैक्सिमाइज करके डिफरेंशिएट करके यस सर। Yes, sir. मिल जाएगा कि कहाँ पर मैक्सिमम है, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे एंड आई गेट द वैल्यू वेयर इट टेक्स द मैक्सिमम वैल्यू। ये आपका टास्क है, इट्स यू हैव टू डू। ये यहाँ नहीं किया हुआ है, ऐसे क्लास में हम लोग कराते हैं ही काम सामने ही, डू कैलकुलेट द वैल्यू वेयर इट इज मैक्सिमम। नाउ फॉर द मॉड स्क्वायर वैल्यू, मॉड स्क्वायर वैल्यू, अच्छा ये भी देख लेना, जीरो से पार हुआ। फॉर द मॉड स्क्वायर वैल्यू, मॉड स्क्वायर वैल्यू पे जब हम आए तो जीरो पर तो ये भी जीरो हो गया, Yes, sir. यस सर। लेकिन पॉजिटिव जीटा के लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव जीटा के लिए भी पॉजिटिव। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसका हाइट से इसका हाइट कम है, देखना। यस सर। एग्री? यहां जो एक तो लाइन ड्रॉ किया गया है, ये कौन सा लाइन है? क्लासिकल लिमिट। Classical limit. क्लासिकल लिमिट, Classical limit. करेक्ट। कितना था? 1.73 plus minus 1.732. देखो तो 1.73. 2 से पहले दिखाए हैं कि नहीं? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. 1.732 classical limit. So this is how the wave function looks like for a harmonic oscillator when it is in its first excited state. इस बार ये मिल रहा है कि उसका मीन पोजीशन पर मिलने का प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो जीरो है, कम है, जीरो है, और मीन पोजीशन से दूर में मिलने का प्रोबेबिलिटी maximum. मैक्सिमम है। लेकिन इस बार भी पार्टिकल के क्लासिकल लिमिट के बियॉन्ड मिलने का चांस है। है. है। इसी तरह से बाद का एक्साइटेड स्टेट को भी ड्रॉ किए हैं, देखने पा रहे हो? n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। Three. समझ रहा है कि नहीं? यस सर। Sir. n इक्वल टू 3, और ऐसे करते करते n इक्वल टू 20 का भी एक ग्राफ है। ये अच्छा, फिर देखो तो यहां पर एनीथिंग स्पेशल इफ यू कैन नोटिस। हम लोग इसको बनाएंगे, कैसे बना है इसको समझेंगे, ऐसा नहीं कि अंदाजी खींच देना है, उसका पीक उक का काउंटिंग होगा, करेंगे। लेकिन कैन यू सी एनीथिंग इंटरेस्टिंग अगेन हियर? एनीथिंग इंटरेस्टिंग? n इक्वल टू 20 पर देखो तो क्या एक्सट्रीम पर मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? Yes, sir. मीन पर मिलने का प्रोबेबिलिटी कम है. कम है। मतलब हम ऐसा बोले कि जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स का क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ एग्रीमेंट बढ़ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes. So for higher energy states of the harmonic oscillator, हार्मोनिक ऑसिलेटर के हायर एनर्जी स्टेट्स के लिए क्लासिकल और क्वांटम का एग्रीमेंट बेटर होता जाता है जैसे जैसे हम लोग हायर एनर्जी स्टेट्स की तरफ जाते हैं। बोलो, समझ आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आपका आज का टास्क इतना ही है कि एक बार घर में इन चारों को फिर से प्लॉट करिए, वेव फंक्शन को लिखिए, देख के नहीं, बहुत डिटेल्स यूज हो रहा है। आपको चाहिए वैल्यू सब निकालने के लिए कैलकुलेटर यूज करना है, कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर लीजिए, बट डू कैलकुलेट। वेव फंक्शन को याद करके लिखो,
उसका साई जीरो निकालो, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालो, क्लासिकल लिमिट निकालो, और n इक्वल टू 0 1 2 3 जो 4 ग्राफ हमने आपको दिया है उसको आप प्लॉट करिए। हम फिर से नेक्स्ट वाले क्लास में n इक्वल टू 20 का प्लॉट हम लोग करेंगे, सामने बैठ के करेंगे। हम ये वाला होमवर्क आपको नहीं दे रहे, ये हम करेंगे सच दैट ये समझेंगे, ये अंदाजी नहीं खींचा हुआ है, ठीक है। दिस इज नॉट रैंडम, हाउ मेनी पीक्स विल बी देयर, दिस आर टू बी डिसाइडेड, ओके। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, आई होप कि आपको एक बात क्लियर है कि माने ऑलमोस्ट तुम्हारा पढ़ाई खत्म होते होते ही तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, है ना। यस सर। जैसे ही हम लोग ये सिलेबस के लास्ट की तरफ पहुंचेंगे तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये जो भी टास्क आपको दिया जा रहा है ना कि इसको करना है, तो सबको बार बार बोलेंगे कि बहुत ऑनेस्टली सीरियसली आज का आज ही इसको पढ़ लो, तभी तुम इसको एग्जाम में भी लिख पाएगा। अगर इस सोच में रहोगे ना कि अच्छा ठीक है बाद में फिर हम कर लेंगे, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, भूल भी जाइए, उतना सफिशिएंट टाइम भी नहीं रहेगा कि तुम हमसे भी आके पूछेगा, उसका भी ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। तो मैंने सबको अच्छा के लिए ही बोल रहे हैं कि इसको पढ़ा दिए। हमने आपको कहा कि वो मैथमेटिक्स सिर्फ सेमेस्टर भर के लिए है, वेव फंक्शन उसका प्लॉट ये लाइफ लॉन्ग के लिए समझने वाला चीज है, एक्सप्लेन करने वाला चीज है। कभी कोई इंटरव्यू दोगे उसमें मीनिंग ही पूछता है, नहीं बोलेगा कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन डिराइव करके दिखाइए। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि डेरिवेशन पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ने से ही बहुत सारा चीज समझ में आता है, लेकिन क्योंकि वो सब बेसिकली इक्वेशंस है स्टैंडर्ड फॉर्मेट का, तो आज का काम आपका है इस चारों को प्लॉट कर लेना। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी उसको लिखे रहिए, कल के क्लास में फिर पूछिए, और तब आगे का n इक्वल टू 20 वाला पे जाएंगे और फिर इसका टाइम इवोल्यूशन पे जाएंगे। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक काम और करना, हम लोग जो टाइम इवोल्यूशन का जनरल थ्योरी और टाइम इवोल्यूशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल पढ़े तो उसको भी रिकॉल कर लेना, नहीं तो कल जब हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लगाने का कोशिश करेंगे तो फिर आपको याद नहीं आएगा। उसका स्टेप से स्टेप कि पहले हैमिल्टोनियन, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, फिर हैमिल्टोनियन लिख लेते हैं, फिर श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बेसिस वेक्टर्स तैयार करते हैं, बेसिस वेक्टर्स में तैयार करने के बाद इस वेव फंक्शन को बेसिस वेक्टर में एक्सप्रेस करते हैं, ये वाला क्रोनोलॉजी, करेक्ट? यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है, मीटिंग एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। यस। Thank you, sir.